तो चलिए अब इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ बहुत ही खास पैनल जुड़ गया है। मैं उन सभी से आपका परिचय करा देता हूं। मेरे राइट यानी दाहिनी तरफ है संजय मल्होत्रा जी, जो कि राजस्व सचिव हैं। बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए इस खास प्रोग्राम में। मुझे के लेफ्ट में अजय सेठ जी, जो कि आर्थिक मामलों के सचिव हैं। G20 की कमान भी सर के पास में ही, और बजट के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें काफ़ी बड़ी भूमिका सर की रहती है। सीए साहब को कल हम लोग मिल चुके हैं इस प्रोग्राम में। खासतौर पर आर्थिक सर्वेक्षण इन्हीं की अगुवाई में लिखा जाता है, इन्हीं की टीम जो है वो पूरा आर्थिक सर्वेक्षण लिखती है और बजट पर भी इनकी टीम का काफ़ी असर देखा जाता है। और परमेश्वर अय्यर साहब जो कि सीईओ हैं नीति आयोग के, और ख़ासतौर पर जो बड़े रिफॉर्म्स हैं जो सैनिटेशन और स्वच्छ भारत अभियान को लेकर के, वो एक पर्याय है देश में और कौन उन्हें नहीं जाता। बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। अजय सेठ साहब, आप ही से शुरुआत करते हैं। इस बजट का अंडरलाइंग जो प्रिंसिपल है वो एक तरह से अमृतकाल का पहला बजट स्पष्ट तौर पर वित्तीय अनुशासन हमें दिखाई देता है, पारदर्शिता दिखाई देती है, ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को फोकस दिखाई देता है। आप लोग कैसे एक बजट टीम कैसे इस बजट को डिफाइन कर रही थी जब आप लोग बनाने की प्रक्रिया में थे? शुरुआत अगर वहीं से करें सर। इसका हमारा उद्देश्य ये था कि जो आर्थिक प्रगति की दर है उसे किस तरह से बढ़ाया जा सके, और साथ ही साथ जो वैश्विक क्षेत्र पे जो अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, अनसर्टेनिटी का एक माहौल है, उससे अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरह से बचाएं, और इसके साथ ही साथ जॉब क्रिएशन को कैसे बढ़ावा दिया जा सके। इस सब को करते हुए जो एक वित्तीय अनुशासन है, जो फिस्कल प्रूडेंस है, उसे कमजोर नहीं करना है, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। और एक साथ ही एक महत्वपूर्ण अंग था कि जिन्हें अभी भी ज़रूरत है सरकार से मदद की, उनके लिए मदद होनी चाहिए। Mr. Malhotra, what was the overarching vision for revenue generation in this budget? Yeah, so it's basically a continuation of our policies. How do you raise revenues? There are three factors. One is, the income. The second thing is the rate, and the third is efficiency. So we have not increased rates. We don't have direct control, over how the economy does. But yes, through the budget, by giving, more in the hands of the public, like we have done, through the new income tax, changes in the new income tax regime. And the third thing is collection efficiency. So the focus really is on simplification, rationalization, increasing the tax base, and wherever there are loopholes to be plug them so that tax avoidance can be minimized, if not totally eliminated. Mr. Nageshwaran, we've heard you talk on the economic survey. It's had a very medium-term outlook, and we got a sense of that in the finance minister's budget. She said that this is the first budget of Amrit Kal. So we are looking at a roadmap for the next 24 years now, this being the first Amrit Kal budget. Do you see it as a visionary budget? Yes, I would say so. I mean, because this budget lays the platform very well for the kind of goals that we are pursuing in the Amrit Kal, because it pursues what I call responsible growth through public investment, at the same time without sacrificing macroeconomic and fiscal stability. So in that sense, if we have to reach the goals we set for ourselves, we need to have not only steady growth but sustained growth, and this budget is a very important first step in that process. Right. And Mr. Iyer, what are your thoughts on the budget? Because there are several provisions there about the center-state coordination, about pushing reforms at the state level and connecting a lot of financial allocation to it. And this is something that the Niti Aayog also deals closely with. So what is your view, if I may ask, your overall perspective on the budget? Sure. I think it's definitely an inclusive growth budget, which colleagues have just spoken about. But if you look at the social sector, I think that has really been now taken down to the grassroots level. So Niti Aayog works very closely with states. The finance minister mentioned the state support mission. So going beyond the success of the aspirational district program, which is really looking about taking them up to the national level, some of the more lagging districts, now that has been taken further down to the block level. And this program was launched by the Prime Minister a few weeks ago. So it's really about taking development down to the people all the way.
So I think that's one aspect where Niti Aayog has been working with the states. But apart from that, if you look at some of the other significant features of this budget, particularly the focus on the poor, the vulnerable, the tribals. So this was, I think, a huge sort of much needed impetus to tribal development for the PM PVTG, the particularly vulnerable tribal groups, a huge amount of 15,000 crores for this mission, which will really deal with this particularly lagging segment among the tribals and to give them basic services in 3 years. So that's just one example. Another very striking feature of the budget, and it's something which I've been following for the last few years, is the announcement by the FM to move from manhole to machine hole. And I think if we follow that agenda, and in cities we can go in for mechanical evacuation, that again is particularly dealing with human dignity as well. So very significant. अजय सेठ साहब, बजट में ग्रोथ पर फोकस ज़रूर दिखता है, लेकिन उसका वो ग्रोथ तभी आएगी जब हमें इन्वेस्टमेंट मिले। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए आपको क्या लगता है कि बजट कहाँ पर वो कौन से प्रोविजंस हैं जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने का काम करेंगे, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को भी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को? इससे मुख्य तौर पर अगर हम देखें पिछले 7-8 महीनों में प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट में भी बढ़ोतरी हुई है। अब वो उस रफ्तार से नहीं आए जिस रफ्तार से पूरी तरह से वो लोड ले सकते हैं, तो उसके मद्देनज़र ये डिसाइड किया गया कि अभी एक और वर्ष पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना है। उसको ध्यान में रखते हुए जो इस वर्ष का एक रिकॉर्ड 7.5 लाख करोड़ का बजट था कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, उसे फिर से 33% बढ़ा के 10 लाख करोड़ ले जाया गया। तो इससे कोशिश करी गई है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों ही साथ में, जिसे कहते हैं बोथ द इंजन्स फायरिंग वाली की बात करी गई। और इसी के साथ एक ये भी प्रयास किया गया कि जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट लाना है तो उसके लिए क्या सहूलत दी जा सकती है, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। जी, और इस वक्त टीवी सोमनाथन जी जो कि वित्त सचिव हैं हमारे साथ इस वक्त इस खास पैनल के साथ जुड़ चुके हैं। और तुहिन कांदा पांडे जी, आपको भी बहुत धन्यवाद, आप दीपम के सेक्रेटरी हैं। एक तरह से पूरा पैनल, एंड वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव यू सर। थोड़ी देर बाद मैं आपके पास आऊँगा। संजय सर, अगर हम सभी लोग ये सबसे बड़ा सवाल यही उठा रहे हैं क्योंकि बजट को पहली नज़र में सब लोग देख रहे हैं तो न्यू टैक्स रिजीम उन्हीं को दिखाई दे रहा है और कह रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल या डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स बहुत सालों से जो हम लोग सोच रहे थे उसका फाइनली आपने ऐलान कर दिया है। तो अब आपको क्या लगता है कि ये हम लोग किस नए कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं अगर हम टैक्स की बात करें, डायरेक्ट टैक्सेशन की बात करें? नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट टैक्सेशन में ये स्कीम हालांकि पहले भी थी, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, उतनी अट्रैक्टिव लोगों को नहीं लग रही थी। लेकिन सरकार की ये हर समय से मंशा रही है और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रयास न केवल पर्सनल इनकम टैक्स रिजीम में किया गया है बल्कि कॉरपोरेट टैक्सेस रिजीम में भी हमारे पास में इसी प्रकार से एक एग्जेम्पशन के साथ में और एक बिना एग्जेम्पशन के 2 रिजीम्स हैं। और उसमें जो बिना एग्जेम्पशन के जो रिजीम है जिसमें केवल 22% सरचार्ज इत्यादि मिलाकर के लगभग 25% होता है, और जो एग्जेम्पशन वाली जिसमें ले सकते हैं लेकिन टैक्स रेट हायर है उसमें 30% है, उसमें हमने देखा कि बिना एग्जेम्पशन वाली स्कीम में बहुत ज़्यादा रुझान रहा और लगभग 61% कॉर्पोरेट टैक्स रेवेन्यू आज के दिन में एग्जेम्पशन रहित के बिना जो है वो स्कीम से आ रहा है। तो सरकार की हर समय ये मंशा रही है कि एग्जेम्पशन से हम दूर हटें ताकि लोग जो है अपने स्वयं के विवेक से ये डिसाइड कर सकें कि उनको यदि निवेश करना है या कोई बचत करनी है या कुछ और व्यय करना है, इंश्योरेंस में व्यय करना है, तो वो अपने हिसाब से व्यय करें और टैक्स के ज़रिए से न करके और एक सिंप्लीफाइड रिजीम जो है वो हमको उनको दें। वो पहले प्रयास किया गया और इस बार जो है और अधिक जो है उसको अट्रैक्टिव बनाया गया है। कई सारे बदलाव जो हैं जो मैं समझता हूँ कि आपके व्यूअर्स को आज दिन तक अब तक जो है उन्होंने देख लिए होंगे, तो ये काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव रिजीम है। मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी की इनकम 15 लाख से ऊपर है, 15.5 लाख रुपए तक, और वो सैलरीड है, तो उसको 52,500 रुपये का नेट बेनिफिट जो अभी वर्तमान में जो हमारी न्यू टैक्स रिजीम है उससे आता है। तो ये 52,000 52,500 रुपये का एक तरह से
एक अच्छा उनको जो है बेनिफिट इसमें मिलेगा। उसी प्रकार से ये सभी आय वर्ग के लोगों को कुछ कुछ जो है इसके अंदर में उनको टैक्स में सहूलियत होगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले नहीं था इस रिजीम में, न्यू रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, वो भी इसके अंदर में हम लाए हैं। तो इस प्रकार से ये सभी माध्यम से न्यू टैक्स रिजीम बिना किसी एग्जेम्पशन के वो अधिक अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ये सबके लिए एक सिंपल रहेगा और सबके लिए लाभदायक रहेगा। Mr. Malhotra, so there are two tax regimes, an old one and a new one, and they are coexisting. Over time, do you expect the structure to be like that, or could one replace the other? I mean, obviously, the move is, towards moving towards a Unified. regime, in which there are no exemptions. That is the whole thrust. But one doesn't want to do it abruptly, and one wants to give choice and give choice and option to the public, to themselves choose for themselves and decide from themselves as to which one they find more attractive. Hopefully they'll find this more attractive, so that this becomes kind of we have made it the default option for them, but it becomes the default choice also for them. नागेश्वर सर, अगर आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो जो इकोनॉमिक सर्वे है उसकी कितनी छाया बजट में दिखाई देती है, या फिर आपकी टीम ने जो कुछ भी रिकमेंड किया है, एज एन इकोनॉमिस्ट टीम अगर हम कहें नॉर्थ ब्लॉक में बैठ के, तो बजट के डिसीजंस में, बजट के प्रोविजंस में वो कितने रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आते हैं? I think we did mention in our economic survey the continued importance of infrastructure, enhancing the productive potential of the economy, and then we talked about trust-based governance, agricultural productivity, MSME sector. Actually, the budget actually ticks all these boxes. The emphasis on 10 lakh crores of public investment, boost to MSME sector through additional allocation for the ECLGS scheme, and also boosting their receivables through a very clear provision, nudging the buyers to pay them on time. And then you look at the ease of living and ease of doing business for ordinary households, etc. So I think all of those 5 pillars that we feel that contribute to the productive potential of the economy, all those 5 pillars have been further strengthened in this budget. Right, Mr. Iyer, there was a lot of speculation ahead of the budget also that there could be urban reforms, and there is a mention of municipal bonds, etc. also. Now, we know that for viability of various municipal bodies, they require money, and then there is an incentivization of user charges as well. So, do you think that this will boost the process of urban reforms, because we are looking at smart cities, etc. going forward? I think absolutely. I think this budget is actually focused quite significantly on urban governance, particularly in tier 2 and 3 cities. And so the setting up of the urban infrastructure fund to incentivize some of those governance reforms. There's a big agenda. Urbanization is a growing trend, and it's important that it spreads across all cities. There are about 5,000 urban local bodies, and I think the thrust and setting up of this fund will incentivize better infrastructure, better governance, and better quality of life in these tier 2 and 3 cities, which is very important. Ajay, the basic question that comes to mind is how confident are we on the fiscal consolidation roadmap? The finance minister did say that the targets will be achieved till 2025-26. But this is the world of uncertainties. So what is the sense that you have, and what would you like to tell the viewers who would be wondering whether about our debt to GDP ratio, whether that is sustainable, about our fiscal health overall? See, Finance Minister announced 2 years back that by 25-26 will reach less than 4.5%, and last year she committed herself once again, and for 6.4, and the present numbers are showing that we are well on track. She has reiterated that commitment once again, and moving forward, going from, and for the next year the target set is 5.9, going from 5.9 to 4.5 over a period of 2 years is eminently doable. And there's something, the way economy has been growing, even with the nominal growth rate coming 10% plus, and we expect that in the future the growth rate should pick up further. These are very doable numbers. Okay, and on inflation management, how confident are we? Because the CAA also referred to it that India has done much better rather compared to advanced economies. Your thoughts on inflation management going forward?
So there are a few inherent advantages which we have. While there are few items where we import inflation, for example petroleum products, etc., but there are a number of items where we produce for ourselves, that Atmanirbhar Bharat, wherein that is much more doable, manage the inflation scenario. And if you look at it for the past 1 quarter, the inflation has now come down to below the 6% of the upper band, and we do expect that over next 12 months or so it should be closer to about 4%. सी सर, अगर हम इसमें देखें तो R&D पे हमें फोकस स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है, और ये भी कहता है बजट कि हम कौशल विकास के चौथे चरण की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर जो न्यू इकोनॉमी है उससे रिलेटेड जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर हम लोग फोकस करने जाएंगे। तो जो अगला हमारा जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, जिसमें आपने अगले डेकेड में कहा कि हम 6.5 to 7% ग्रोथ करेंगे, कितना इम्पॉर्टेंट है ये R&D पे फोकस करना अलग अलग क्षेत्रों में फार्मा और कुछ सेक्टर्स के लिए स्पष्ट प्रावधान देखें इस बजट में? No, I mean, undoubtedly the research and development as an area of importance is true not only for the government but also for the private sector. The government is of course setting up in the Center for Make Artificial Intelligence in India and Make Artificial Intelligence for India. Both are important indicators of government's willingness to expand the frontiers of science and technology, apart from several other initiatives in the budget related to agricultural sector, or for that matter with respect to the green transition as well. But ultimately the initiative for moving the Indian R&D agenda lies very much with academic institutions and industry, and the kind of partnership that both of them can strike with each other in order to make sure that India doesn't lag behind in terms of technology, especially in a world which is going to be politically quite divided, and therefore we need to have our own technological capabilities, and the onus lies as much with the private sector as with academic institutions. Right. CSR, I'd gone through the economic survey, and in the context of G20 you mentioned two things. One is crypto regulation and the other is the tourism sector, and you say that this is an opportunity to make India the tourism destination of the world. The budget speaks about how tourism will be taken up in mission mode, and that there will be a sort of a very comprehensive approach towards tourism. So how is this expected to give a boost to employment generation, to economy as a whole? How do you look at the perspective that has been put forth by the FM on tourism? No, I mean, when it comes to employment, obviously the public investment proposal as well as tourism are two key aspects of the budget in terms of job creation. Because tourism is particularly attractive because of its skill and labor intensity, and it is in fact a kind of sector which can provide employment opportunities for semi and low skilled workers as well. And that is why, and not only it is a matter of boosting the country's image, but it is also a matter of earning precious foreign exchange as well as creating employment opportunities. So I think the priority and the importance given to the tourism sector will serve us quite well in many aspects, both strategic and economic. Okay. And the two guests who are joining us are Mr. Somanathan, he is the Finance Secretary and the Expenditure Secretary, and also Mr. Pandey, the DPM Secretary. So welcome again to this special broadcast. First of all, your overall thoughts on the budget. What is the overarching vision that you see? Because you are one of the makers of the budget. I think I see three major items of focus, Right. which are complementary. The first is a stress on keeping India's macroeconomic growth rate high, because growth is the fastest route to development but also to reducing poverty. So there's a strong stress on growth. You see it in the capital expenditure provision, you see it in a number of the other provisions in the financial sector, on infrastructure funding, urban infrastructure development fund, and so on. So those are to push growth. But this is balanced with a strong emphasis on not doing something which is macroeconomically unwise, not doing the kind of things that some of our neighbors have done. And basically
letting the economy continue on a prudent macroeconomic path. So we have pushed growth, but pushed it within a framework of prudence. So there is a distinct attempt to consolidate the fiscal deficit while increasing public spending. It's a difficult thing to do, but that's what the budget has attempted to do. The third important part of this framework is that while promoting growth, while preserving macroeconomic stability, the budget has tried to take care that no one is left behind. People whom the market economy may not support on its own. The government has taken special measures to take care of each and every one of these groups, ranging from particularly vulnerable tribal groups to women, to the unskilled, and to every class of the underprivileged. So I think these are the three main points of stress in the budget, and it is the balance between these three that we have attempted to achieve. और इस बजट में सर एक बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट जो लोगों को ये दिख रहा है कि जो जेल में ऐसे कैदी जिनके पास बॉन्ड्स भरने के लिए पैसे नहीं है उनको भी गवर्नमेंट सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो लोगों ने शायद सोचा भी नहीं था ऐसे लोगों के लिए भी इस बजट में प्रावधान है और इसमें कोई दो राय नहीं कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट को मेन फोकस में रखा गया है। लेकिन एक्सपेंडिचर का रैशनल थोड़ा सा सर हमें थोड़ा सा डिटेलिंग में आप बताएं कि जो एक्सपेंडिचर आपने प्रायोरिटीज़ की हैं इस बजट में उसके पीछे का रैशनल क्या है, सब्सिडीज़ को लेकर के आपकी आप क्या सोचते हैं और जो ओवरऑल ईज़ ऑफ लिविंग को प्रमोट करने के लिए एक्सपेंडिचर किए गए हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है? इस बजट में जो एक्सपेंडिचर प्रायोरिटाइजेशन किया गया है ऐसा है कि एक तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर को जितना हो सके हमने बढ़ाया है, दूसरी तरफ इसके लिए क्योंकि मैंने कहा कि हमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी कायम रखना है तो इसलिए हमने ये अप्रोच लिया है कि जहाँ संभव है वहाँ हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को टाइट कंट्रोल में रखा। ऐसा नहीं कि कम किया है लेकिन टाइट रैशनलाइजेशन और कंट्रोल पे रखा है ताकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रोथ बजट ग्रोथ से कम है। मतलब जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर ग्रोथ है उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ग्रोथ के रफ्तार ओवरऑल एक्सपेंडिचर ग्रोथ से कम है और कैपिटल एक्सपेंडिचर एवरेज से ज़्यादा है। सो ये फोकस रहा है। इसमें रिडक्शन इन सम ऑफ द की सब्सिडीज फर्टिलाइजर food has helped. It's a very important part of this strategy. There I think the basically global factors have an important role to play, but there are also a number of measures that the government has been taking to reduce leakages. All the efforts on DBT taken all these years, they are beginning to give us results. So this expenditure rationalization is not an accident, it is also a conscious policy. जी कुछ नई स्कीम्स का भी जिक्र किया गया है और इट्स एन ओपन फोरम जो भी इस सवाल को लेना चाहता है। जो पीएम प्रणाम योजना है उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स नहीं आई, तो अगर आप थोड़ा सा इस कार्यक्रम के जरिए बता पाएं कि उस स्कीम में हम क्या कर पाएंगे। इट्स ओपन, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये सवाल किसके पास है। ये इस स्कीम का उद्देश्य ये है कि केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग एक्सेसिव है हमारे एग्रीकल्चर में। ऐसा नहीं कि केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करना है, लेकिन जिस मात्रा में अभी यूज हो रहा है वो सॉइल के लिए भी अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है और एग्रीकल्चरल आउटपुट के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें डिमिनिशिंग प्रोडक्टिविटी आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर लगाओ लेकिन आउटपुट वैसे ही है। तो इसलिए इसको चेंज करने के लिए दिस विल बी अ स्कीम विच विल इंसेंटिवाइज स्टेट गवर्नमेंट्स to promote alternative natural fertilizers and provide them with fiscal incentives whereby they will get money to help them promote it, and this will also be a win-win for the states and for us. Mr. Somanathan, there is a lot being done to promote private investment, and a particular signature initiative could well be the Infrastructure Finance Secretariat. I'll just add one thing to what I said. Please. The reason state governments are important, why PM Pranam? Though agriculture is primarily in the domain of the states, fertilizer subsidy is not a centrally sponsored scheme. It's 100% borne by the center. Every paisa of fertilizer subsidy is borne by the center, even though agriculture is with the states. So the states have currently no fiscal incentive to do anything about the fertilizer.
So this is an attempt to work together in a spirit of cooperative federalism, where the states and the center work together to shift from excessive use of chemical fertilizers to an appropriate use of chemical fertilizers with the right dose of non-chemical fertilizers. But sir, Boost यूरिया being सब्सिडी given to natural farming. Yeah. यूरिया सब्सिडी में थोड़ा सा हमें रिलीफ देखने को मिला सर। नंबर्स में हम देखें तो शायद उसमें सब्सिडी थोड़ी सी कम हुई है। इंटरनेशनली जो प्राइसेस हैं उनके बिहेवियर किस तरह से आपको आगे मतलब ये सब्सिडी के आगे आने वाले सालों में और कम होने की उम्मीद है? जिस तरह से हम शायद नैनो यूरिया पे फोकस कर रहे हैं, वो एक हमारा अच्छा इन्वेंशन है जो शायद थोड़ा सा रिप्लेसमेंट कर सकता है और सब्सिडी के बर्डन को कम कर सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा साइज है फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी का पूरी इकोनॉमी में देखें तो। ये फर्टिलाइजर सब्सिडी के बारे में जो रिडक्शन दिखाया गया है बजट में, इसका मूल कारण ये है कि ग्लोबल फर्टिलाइजर प्राइसेस एंड गैस प्राइसेस, ये दोनों डिटरमिन करते हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी को। गैस प्राइसेस फॉर यूरिया एंड इंपोर्ट पैरिटी प्राइसेस फॉर नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स both have declined from the peak. So we have taken an approximate 20% reduction from this year's figure, which we think is reasonable. तुनकादर पांडे सर, स्वागत है आपका। और आपसे तो बस सीधे एक ही सवाल चलिए कोशिश करेंगे आपसे बात करने की। हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि ये इट्स सॉर्टेड। तो अगर सीधा सवाल आपसे डिस्प्लेसमेंट को लेकर के, तो बजट में क्या कुछ दिखाई देता है? हमें स्पष्ट तौर पर कुछ ज़्यादा समझने को नहीं मिला। आप ही अगर समझा पाएँ तो विनिवेश को लेकर के हमारी सोच क्या है इस आने वाले साल के लिए? देखिए, जो दीपम है वो 3 कैटेगरी में इसमें इन्वॉल्व है। एक तो पहले ये कि जो संस्थान CPSEs हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक रहे, उनमें प्रॉफिटेबिलिटी रहे और उससे काफ़ी मात्रा में जो डिविडेंड आता है वो डिविडेंड हमें मिलता है। तो एक डिविडेंड का है जिसका कि 43,000 करोड़ का प्रोविजन रखा गया। दूसरा है कि कुछ जो इक्विटी हम विनिवेश करते हैं, तो एक विनिवेश का वो है उसका 51,000 करोड़, तो दोनों को मिला के लगभग 94,000 करोड़ की व्यवस्था इसमें की गई है। Is that for the next fiscal? नेक्स्ट फिस्कल। Okay. तो तीसरा जो मुख्य उद्देश्य होता है वो CPSE का कैपेक्स। आप देखेंगे कि 10 लाख करोड़ की कैपेक्स की बात हो रही है, उसमें से उसमें ये जुड़ा हुआ नहीं है। जो CPSE का लगभग 4 लाख करोड़ का जो इंटरनल और एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज से जो कैपेक्स है वो भी इकोनॉमी में उस कैपेक्स को वही करता है जो कि इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ जिसके बाद हम करते हैं। Right. Yeah. Please continue. तो इन तीनों को दृष्टि से देखा जाए तो उसमें तीनों की व्यवस्था बजट में है। Right. Mr. Somanathan, you missed the question on the Finance Infrastructure Secretariat. How is that going to change how private investment? Yes, Mr. Seth. So, infrastructure finance secretariat has 2 purposes. One is to help or work with the stakeholders in each infrastructure subsector to shift away or shift from taxpayers financing to user financing or ratepayer financing, meaning they get more and more bankable projects, and that's going to be long haul. It has to be a glide path to come in. To give an example, today telecom, ports, airports, these are largely private sector funded, but when it comes to railways, roads, urban infrastructure, these are mostly public resources, taxpayers are financing it. So one part is move on that path. Second one is the capacity building, and that's a journey which has started last year and it continues even in this year to take those sectors towards the user pay. And there the 2 major announcements which are coming in is on urban planning reforms, which can be the source for financing urban infrastructure, and as well as making cities credit worthy for municipal bonds, and they're a part of the 50-year interest free loans to the states will be used in incentives to prepare the cities to move in those 2 directions. परमेश्वर सर, अगर आपसे समझना चाहें ये जो फोकस है SHGs पे, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए हम कैसे ग्रोथ को प्रोपेल कर पाएँ, साथ ही साथ विश्वकर्मा अभी PM विकास योजना जो लॉन्च की गई है उसमें जो आर्टिसंस हैं उसकी उनकी स्किलिंग करके कैसे उनको मार्केट कर पाएँ, आपको लगता है कि वाकई ये ग्रोथ के एक बड़े इंजन साबित हो सकते हैं आगे जाते हुए और इंक्लूसिव ग्रोथ को एक साथ ही प्रमोट करेंगे ग्रोथ के साथ साथ? Yeah, I totally agree with that. Self-help groups, there are about 80 lakh self-help groups in India, and they're already doing very well. They are providing self-employment, they're generating income, and with a little more push from the budget in terms of marketing and branding,
they can actually create more employment and generate more income and revenue. In addition to that, the talk of the unity malls in states, once they are set up there, you can also bring in the ODOP, one district, one product. So that can also be marketed there. So that can be connected with the self-help group movement as well. Artisans के बारे में आपने कहा, again, these are people who are skilled. Now, how do you take that skilling to another level so that they can generate more income? And I think again, this is a big push through this budget. The pushing through of the artisans, carpenters, plumbers, etc., who are functioning currently at a low wage level. But I think with a little more encouragement, little more support, they can move up the value chain. जी सोमनाथन सर, थोड़ा सा जो हमारा कौशल विकास का 4.0 या मतलब चौथा चरण है उसके ऊपर हम थोड़ा सा आपका फोकस रखना चाहेंगे। और एक पैरा में हमने कहीं पढ़ा कि अप्रेंटिसशिप को प्रमोट करने के लिए शायद आप डीबीटी के जरिए उनको कुछ पैसे, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि क्या ये कैसे आप लॉन्च करेंगे इस मिशन को। जहाँ तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 का सवाल है, ये एक नया कंटिन्यूएशन स्कीम है, लेकिन इसका एक नया रूपरेखा है। जो अभी तक हुआ है उसमें ट्रेडिशनल स्किल्स, ज़्यादातर ट्रेडिशनल स्किल्स का एम्फोसिस रहा है, लेकिन अब इसमें ये 4.0 में न्यू एज स्किल्स ऑफ टुमारो, उस पर हम ज़्यादा बल देंगे। Several of them have been mentioned in the speech: mechatronics, all these emerging technologies where the youth of tomorrow need to acquire skills rather than the traditional technologies alone. Not that all those will not be relevant, but many of them may be, but there are these new age skills, and the emphasis in this will be to train the youth in the skills that will make them employable in tomorrow's economy and prepare them today. So वो उसमें main focus area है। और जो नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम के बारे में आपने कहा, इसमें यह है कि आज के सिस्टम ये है कि उनका जो फिस्कल सपोर्ट भारत सरकार देता है वो थ्रू द एम्प्लॉयर जाता है। उसमें देर आर मेनी वेरी ethical and good employers, but there are also cases where the full support doesn't reach the employee or the apprentice, not an employee, an apprentice. So to make sure that the apprentice gets the full amount that the government is giving towards the apprentice as a stipend, this is will be done now through a direct benefit. Okay. Mr. Pandey, I've noticed a very interesting feature of the government of India and social media. They started a campaign, promises made and promises delivered. So in the context of disinvestment, how would you put it for the viewer to understand? Because there's a PSC policy, there was a decision earlier taken that all the central public enterprises except in post-strategic areas will be privatized. So can you give us a status of implementation? देखिए, जो PSC पॉलिसी है वो एक मार्गदर्शक के रूप में पॉलिसी है और उसको कार्यवाही करने के लिए समय लगेगा, क्योंकि ये तो आप देखिए जो डिसइन्वेस्टमेंट की बात है, इसमें बहुत सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो अभी जारी हैं और उनको हम कंप्लीट कर पाएँ। इसमें हमको 4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है डिसइन्वेस्टमेंट के लिए समय के हिसाब से। एक तो बैंडविड्थ कितनी है, क्योंकि जो हमारी बैंडविड्थ है, जैसे जैसे हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं बैंडविड्थ भी कम होती है। जैसे लगभग 4 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट ओवर लास्ट 8 ईयर्स हुआ है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो मार्केट कंडीशंस हैं, जो मार्केट कंडीशंस की क्या स्थिति है। तीसरा जो है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं बहुत से लिस्टेड कंपनीज़ में, उनका जो उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखना पड़ता है। और चौथा जो इसमें विषय है प्रोसेस है। किसी भी उसमें जो प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस है, खास करके जब भी हम मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें समय लगता है। इन सभी को देखते हुए ये एक प्रक्रिया है जो कि समय सापेक्ष है और धीरे धीरे चलती है। अजय सर, अगर आप एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड को एक बार थोड़ा सा समझा पाएँ हमें कि ये किस तरह से यंग एंटरप्रेन्योरशिप को रूरल एरियाज़ में बढ़ावा देगा और ये फंड किस तरह से काम करेगा आगे जाते हुए इनोवेशन और अफोर्डेबल सॉल्यूशंस फॉर चैलेंजेस जो कहा गया, जो फार्मर्स चैलेंज फेस कर रहे हैं, साथ ही साथ एग्रीकल्चर में स्टार्टअप कल्चर को कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए। ये जो है एक जो एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को लाना और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके मैनेजमेंट के लिए
टेक्नोलॉजी का उपयोग किस तरह से करें। तो जहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए एक सीड कैपिटल जो वहाँ पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट दिया जा सके, वो स्टार्टअप के तौर पे जो वहाँ पर आ रहे हैं रूरल एरियाज़ में, जो फार्मर्स के सॉल्यूशंस जो हैं। और ये जो एक अनाउंसमेंट है, इसके साथ जो अनाउंसमेंट हुआ है, एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर के लिए बनाया जाए। जैसे कि हम लोग जैम ट्रिनिटी की बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, उसी तरह से वो किसान है, किसान की ज़मीन है, उसका एक नक्शा है और सैटेलाइट के थ्रू उसका जो एक इमेज आती है कि जो फसल की क्या कंडीशन है, और उसके लिए एक मार्केट है जहाँ पर उसे प्रोड्यूस करना है। तो इन सबको कैसे हम बना सकें कि एक इंडिया स्टैक फॉर एग्रीकल्चर बन सके, इन दोनों को साथ में रखना है कि जहाँ पर एक क्लियर आइडेंटिटी बन सके, जहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स आके और फिर किसानों को वो जो सुविधाएं हैं, जो उनकी सुविधाएं नहीं, जो उनके लिए सर्विसेज चाहिए, किसान को है कि उनकी क्या फसल की क्या परिस्थिति है, उसमें क्या कहाँ पर क्या दाम मिल रहे हैं, इस सब के बारे में। तो दोनों अनाउंसमेंट को साथ में देखने पे इसका बहुत ही ज़्यादा परिणाम निकलेगा, लेकिन इसमें भी समय लगेगा, 2 से 3 वर्ष का समय लगेगा इसे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने। और ये ओपन सोर्स आपने बनाया है, उसके पीछे का रैशनल क्या है? उसमें कैसे सभी लोग कैसे उसमें कॉम्प्लीमेंट कर पाएंगे बीइंग एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म? उसमें ऐसा है कि जब ये तो किसान की ज़मीन है, लेकिन उसका रिकॉर्ड कहाँ है? वो किसी राज्य सरकार के किसी सर्वर में वो रखा हुआ है, इसी का नक्शा भी वहीं पर रखा हुआ है। अगर कोई किसान जाता है और किसी एंटरप्रेन्योर से कहता है कि जी मुझे मेरी जो ज़मीन है उसकी एक सैटेलाइट मैप चाहिए कि मेरी फसल की क्या कंडीशन है उसके बारे में पता करना है, या फिर वो कहीं से लोन लेना चाह रहा है, बैंक को उसे चाहिए कि उसने क्या चीज़ उगाई है वहाँ पर, वो बैंक को कैसे पता लगेगा? तो किसान कहता है जी भाई ये तो रिकॉर्ड कहीं रखा है, आप उसमें से वहाँ से देख लो। लेकिन जब तक ये ओपन सोर्स नहीं होगा, कोई भी एंटरप्रेन्योर उसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं डाल सकता है। किसान ने कंसेंट दी, जी मेरा रिकॉर्ड उस राज्य सरकार के पास रखा है, आप वहां से पिकअप कर लो। So that it becomes on the consent of the farmer, a bank can get it which crop he has grown with clear area being known, and then he can give the credit for this. So that is the open source advantage it will bring in. Right. तो परमेश्वर सर, ये जो लैंड रिकॉर्ड है उसका पूरा डिजिटाइजेशन का जो प्रोसेस चला, आपको लगता है कितना समय में ये हम पूरे कंट्री में नेशनल वाइड इसको हम पूरा कर पाएंगे, जिससे कि सर जो कह रहे हैं कि एक सभी स्टेक होल्डर्स उसका फ़ायदा उठा पाएँ? तो उसकी I think the digitization of land records is well underway. This program has been going on for quite a while, and it goes along with the overall push on digitalization. Our digital public infrastructure, which is the largest and perhaps most successful in the world. So this is an integral part of that. अभी अजय ने इसके बारे में कहा है. So the agro stack, if you implement it there, this will become a critical requirement. Unless you have digitized land records, it will be difficult for banks to then see it without the farmer coming all the way there, and the presence-less approach will not be followed. So this is going on. It will take some more time, but the ultimate aim is to have all the land records digitized. I think CA sir can add, because he has a special chapter on this agriculture and how to modernize it going forward. No, absolutely. I think what we stated in that chapter and what the CEO of Niti Aayog also mentioned both gel together quite well, because right now the focus on agriculture in India is not so much as food security, because we have achieved that. The importance is to now move towards nutritional security, and that requires enhancing agricultural productivity, about which the finance secretary also mentioned in terms of application of the right kind of fertilizers, improving soil yield, crop yield, etc. But the digital infrastructure and its application to the agri sector is part of the idea of using digitization to enhance potential growth, and the chapter on infrastructure also in the survey mentions that this has the potential to add about 30 to 50 basis points per annum to India's real GDP growth. And I see this as an important, therefore, part of that exercise of using digitization to enhance productivity in all sectors, and thus in the overall economy as well. Right, Did you said half a percentage per year, sir? 30 to 50 basis points to the potential growth in terms of annually. Okay. And Right. sir, आप कुछ add Just a करें? data point I would like to share. Today in the country we have 95% plus ownership records are already digitized. But when we come to the spatial data, which is about the maps, the percentage is close to about 80%. But when we move further, that those maps, how much of that are lat and long, latitude and longitude are there, the GIS numbering, the mapping, that is in the range of about 1/3.
Okay. And so that is a critical one. If you want to use either the drone data or the satellite data to know about the crop, some states have done almost full, but some states are yet to reach over there. So that's a critical piece, is take that 30-35% to again close to about 80%. Right. Right. Now, CS sir, what are your thoughts on the national data governance policy, how that is going to boost research and innovation for academia and startups? No, absolutely. I mean, when we talk of digitization and then the interoperability, sharing of data between different institutions and different sectors, a data governance policy, both in terms of ensuring privacy and security, are critical cogs in the wheel. And if they are not there, there will naturally be a hesitation on the part of users to permit their data to be used for different economic purposes. So I think this is a pillar that has to fall in place as soon as possible, so that the full benefits of digitization can be realized by all constituencies in the economy. If I could just add to that, Niti Aayog has developed, in fact, together with the CEA, the National Data Analytics Platform. Yes. So this is an open source platform which has got 200 data sets of government based information, and it's interoperable, machine read, so you can actually use this for analysis and public policy. So there's something I think which even the CEA has been using, which is a privilege for us in NITI, again to use this data easily, and it's 200 data sets, it's on a public platform. Data for governance is the Data- buzzword even in the G20. Right. सोमनाथन सर, अगर हम थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, तो हमने देखा कि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है 111 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, उसमें स्टेट, सेंटर एंड प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन एक निश्चित अनुपात में तय किया गया है। निजी क्षेत्र को या फिर कहें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आए, और आपने जो ये हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको एक्सपर्ट कमेटी से कहा है कि आप शायद रिव्यू कराएंगे, उसका क्या मतलब है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए? Ajay ji. Harmonized master list, it serves two purposes. One, that if we have to do something well, we must be in a position to measure it. What is infrastructure is a critical one, as a distinct from any industrial project. And till about 2 decades back in our country, we had no single definition of infrastructure. So 2012, the first harmonized master list came in, and prior to that there was a list of planning commission, there was a list of RBI, and so on, and so these were all merged and a single one came in. What is infrastructure? What the usage is how the banks finance it, and what kind of a physical incentives, if at all, have to be given, have to be provided for it. So this list was prepared, that report came in 2005, Dr. Rangarajan headed that committee, and 2012 it was announced. But now we realize that the requirements of Amrit Kal are different. For example, we have moved very, very strong on the digital part, digital economy. So this list requires a review, and to get the newer sectors in, and maybe the sectors which have lost relevance, take them out. और प्राइवेट सेक्टर कैसे इन्वेस्टमेंट हम ला सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे उनको इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, उनको अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं इस सेक्टर को उनके लिए? So the private sector will come in only when the project is generating enough returns for them, maybe with some one-time support or maybe recurring support from the government. That's why at that time went on this aspect, that instead of making taxpayers and the next generation paying for it, how do we gradually move towards increasing or putting a user charges? If you look at this manner, till about 2 decades back, toll on roads was unheard in our country. Now toll on roads is an acceptable one. It is still not a fully financed, but maybe about 20 to 25% of the roads can be financed out of the toll revenues with some support from the government. But the challenges in different sectors are entirely different. So that is some of the projects in urban areas. I just heard that one of the cities with the population of about 3 million is generating 150 crores through waste to energy project. 150 crores in a year is not a small sum. So things are moving. और इसीलिए शायद 500 वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट लगाने के बाद ये गोवर्धन योजना में आप लोगों ने बनाई है, शायद वो भी एक अच्छा मल्टीप्लायर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है. There are already close to about 40 plants are already working,
And out of 500 projects, 200 projects are the large projects, 300 are community based projects, but 200 are commercial projects being set up, and those are commercially viable, and the energy which the biogas which gets produced and then it is compressed and is combined with, is mixed with the natural gas and goes for industrial use. Right. Mr. Somanathan, there is a green credit program that has been announced. Can you tell us about how resources will be mobilized? This looks like the next phase of life. Is my interpretation correct that, other than appealing to people to adopt a lifestyle, now there is a credit program so people can accumulate credits? That's right. It is basically, it's not necessarily a financial Right. credit. It's not credit in the sense of bank credit, or it's a credit in the sense of accumulating credits, as you've rightly identified. So this is a policy that the Ministry of Environment and Forest is working on. The contours are not fully defined as of now, but they will be coming out with a policy statement soon on how the green credit program will operate. So I don't have the details with me. Right. You've mentioned the green economy in the economic survey. Sir, your thoughts on a concept like this, a green credit program? No, I think the emphasis given to the green economy in this budget is very comprehensive, from technology to resources to storage and then renewable energy. At the same time, there is also emphasis on nudging farmers towards use of organic fertilizers, natural farming, and then the emphasis on wetlands. And hydrogen mission that you've mentioned mangroves, as well. hydrogen mission, which I left out. Thank you for pointing that out. So all of them actually form a very comprehensive and logical, multifaceted approach to greening the economy. And in that regard, I would say lifestyle for environment and the green credit, it's almost like a frequent flyer program for airlines. You have to accumulate points in terms of how do you sort of act and behave and execute economic activities in a manner that is not destroying the environment, and you get credit for it. So it's a way of incentivizing as well as discouraging activities that are going to be environmentally unfriendly. So I think it's a worthwhile initiative. It complements other programs in the green economy concept as well. But the Niti Aayog want just add to it, how it can probably work out. Of course, the details are actually detailed. But if you recall, there is something called the REC, which is the Renewable Energy Certificate. Right. So if you produce renewable energy, you may not get the price, because renewable energy used to have a different price, a higher price than conventional price. So you don't get that price, the higher price, but you get a certificate which is tradable. So this is one way of giving credit for having produced green, helping the environment. And similarly, you can have certificates, like you have carbon certificates. So that's also an example of green certificate, and so on and so forth. If you are using LEDs, you save so much of energy, and so you help environment, and so you get a credit for that. The details, of course, have to be worked out, but these are some of the examples how you can give credit for helping the environment. बोलो तो सर, अगर हम थोड़ा सा रेवेन्यू की बात करें तो इस साल का जो रेवेन्यू प्रोजेक्शन आप लोगों ने पिछले साल के बजट में किया था, शायद प्लीजेंट सरप्राइज मिला इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ. अगले साल का जो मेरे ख्याल से जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ आपने 10.5% बजट में शायद एज्यूम किया है, उसके ऊपर आप लोग रेवेन्यू ग्रोथ किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि सब कुछ तो रेवेन्यू से ही ड्राइव होना है. सेम हमने जो बॉयंसी ली है वो सेम 1 का फैक्टर हमने लिया है. तो 10.5% यदि जीडीपी का अनुमान ग्रोथ का है, तो सेम ग्रोथ का अनुमान रेवेन्यू में भी है. हमारा प्रयास ये रहेगा कि जैसा मैंने कहा, 2 मुख्य इसके अंदर फैक्टर्स रहते हैं. एक रेट हम चेंज नहीं करना चाहते हैं, दूसरा एफिशिएंसी. तो एफिशिएंसी को हम बढ़ाना चाहेंगे, वो बढ़ती है तो निश्चित रूप से 10.5% से ज़्यादा भी रेवेन्यू में कलेक्शन हो सकता है. टैक्स बेस आपको लगता है कि आगे आने वाले दिनों में हम कुछ बढ़ा पाएंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स निश्चित रूप से टैक्सेस के बेसिस में बढ़े हैं. मैं यहाँ पे आपको सूचित करना चाहूँगा, जीएसटी हमने पिछले 5 वर्ष पूर्व जो है हमने ये जीएसटी हम लेकर के आए. कई सारे टैक्सेस को हमने एकत्रित किया, एक टैक्स हमने यहाँ पे दिया, और वही हमारी प्रयास
कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में जो मैंने पहले पूर्व में कहा और पर्सनल इनकम टैक्स में सिंप्लीफिकेशन की है। जीएसटी भी एक सिंप्लीफिकेशन है। आज आपको मालूम है कि मैं अगर कोई वस्तु खरीद रहा हूं तो उसके ऊपर मैं क्या टैक्स मैं पे कर रहा हूं, तो वो एक सिंप्लीफिकेशन के ज़रिए से टैक्स बेस जो बढ़ा उसका एक उदाहरण है कि जब हम जीएसटी लेकर के आए तब वैट के समय में लगभग 60 लाख डीलर थे, जो कि आज के दिन में आपको मालूम है कि 1 करोड़ 40 लाख है। तो इतनी बढ़ोतरी जो है दोगुने से भी उसमें ज़्यादा हुई है। बढ़ोतरी। और जो टैक्स में जो जीएसटी में जो वृद्धि हुई है वो भी जीडीपी की ग्रोथ से ज़्यादा की वृद्धि हुई है, जबकि रेट हमने वहाँ पे नहीं बढ़ाया है। तो यही प्रयास इनडायरेक्ट टैक्सेस में रहेगा, डायरेक्ट टैक्सेस में भी यही हमारा प्रयास रहेगा कि किस प्रकार से हम बिना दरों को बढ़ाए हुए कलेक्शन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हुए रेवेन्यू को बढ़ाएं। Right. Now, Mr. Iyer, two questions to you. One on the green credit program, because it will be incentivizing individuals, companies and local bodies. So you may have to coordinate with state governments for that. How do you plan to take that forward? And second, the provision that has been made of setting up 100 labs for developing applications for 5G services with a very solution-centric approach, because it involves coming up with smart classrooms, with intelligent transport systems, healthcare applications, precision farming. So how do you plan to involve states in this going forward? Sure. So on the first one, of course, this will figure as part of the state support mission, which will continue for the next 3 years. But coming back again on the green credit, which we have been discussing. So lifestyle for the environment is essentially, the Prime Minister announced it in Glasgow in COP26. So you can look at it at the other end of the climate debate. On the one side you have the science, the policy, the NDCs, the discussion which is going on globally on climate financing. And on the other end, how you could, the kind of the demand side. How can people actually individually and as a community contribute to climate and become pro-planet people? So there have been studies as well by UNEP where individual action can actually reduce emissions globally by up to 20%. So you can take direct action, simple things, conserving water, using less electricity, etc. So, but that in turn will, that nudge in behavior can trigger demand. So there's a supply response from companies, from industry to produce more environmentally friendly products. So there's a policy dimension to it as well. Now in terms of credits, again, this has not yet been worked out, but again, these actions which individuals can take, and if they can be verified, could definitely lead to credits. And so that's something which is being worked out by the Ministry of Forests and Environment. On the other front, in terms of technology and research and labs, as you know, we have the Atal Innovation Mission, which focuses on tinkering in schools, setting up innovation, promoting startups, and now, as Ajay mentioned, particularly in the agri space. So all this is going to be part of the state support mission, which NITI will bring to states. But again, it will be, there's no one size fits all. So every state has got a different requirement. And so the support has to be tailored. We have to build on the comparative advantages of NITI, which is in innovation, disruption, digital, mobility, asset monetization. So we'll be bringing many of these aspects where we have some comparative advantage down to each state depending on the particular need. अब मैं एक जेनरिक सवाल शायद सीए सर ले सकते हैं या सेक्रेटरी साहब आप ले सकते हैं, जो हमारे 3 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, वो बजट के बाद किस तरह से आप देख रहे हैं अगले साल परफॉर्म करते हुए, अगर आप लोग अपनी एनालिसिस दे पाएँ इन जनरल इस बजट को देखते हुए? मतलब एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज. I think the budget actually doesn't discriminate between all the 3 sectors. It's an equal opportunity provider with respect to all the 3 sectors, because for agricultural productivity and investment there are plenty of schemes announced, including organic fertilizers, natural farming, accelerator, credit, etc. Then when it comes to manufacturing, of course, the entire thrust on public investment and the continuing emphasis on PLI schemes, etc., is about raising manufacturing share, and the public investment is going to accelerate that. When it comes to services, of course, the new skilling mission, the number of new nursing colleges, the entire emphasis on tourism sector is all about making the best out of India's service sector advantages. So the budget actually does a pretty good job of ensuring that all 3 sectors fire in terms of boosting the economic growth in the years ahead.
तो फाइनेंस सेक्रेटरी सर, लास्ट वर्ड इस प्रोग्राम में आप बजट के बारे में जो शायद हम लोग सवाल नहीं कर पाए, बहुत सारे लोगों ने आपसे सवाल आज किए होंगे, जो चीज़ आप बताना चाहते हैं और सवालों में नहीं आ पाया, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए प्लीज़। I think there are some important announcements that I've been watching what you're putting out there. I think one of the very important parts of our economy is not in the executive branch, that is the judicial branch. So there is an important announcement in this budget for the e-courts phase 3 project. This is a project which at a cost of 7,000 crores will involve digitizing all the court records throughout the country, not just the higher courts, but also the district courts and the courts which are below the high court level. It's a massive project and it will help bring the judicial branch of government into a higher level of digital and electronic governance. I think it's an important project. I have noticed that nobody has asked me this question and nobody has, I think, reported it in this. So I thought that's an omission that I would like to fill. There are a few more, but that would be... No, please carry on. I think there's an important aspect of this budget, which is there has been some commentary on the fact that the maximum marginal rate of income tax has come down, and that's a very conscious objective of the government. But quite a few steps have been taken in this budget to close loopholes, which are predominantly used by those with the highest incomes in the country. Some of them are well known, such as that certain very high level insurance policies, which are investment policies. We are, again, I would clarify for this is an important point. Any policy of insurance of any value, however big it may be, if it is for term insurance or if it is payable after the lifetime of the purchaser to his family, continues to be tax free. There's no limit on that. But there are a lot of investment policies, insurance policies, which are actually investments, but which are clothed as insurance policies in order to get tax benefits. Now, those kinds of policies, a cap is being brought so that it is not a source of avoiding what should legitimately be paid as income tax. The same with an instrument called the market-linked debenture, which is actually a debenture in every sense, but wears certain clothes of an equity investment and thereby gets taxed as an equity investment. So we are sort of piercing the veil of these clothes that they wear and getting into the reality of the substance of the transaction and taxing them accordingly. And then there is a provision where if you have acquired a capital gain on real estate and you invest it in another piece of real estate, or if you've acquired a capital gain on something else and you invest it entirely in real estate, the entire amount was tax free. And there have been cases of people with large sums of money who have been in the maybe through a startup or some big amount. All you have to do is to find a suitably expensive piece of real estate somewhere in Bombay or somewhere, and the entire gain is tax free. So these have impeded the buoyancy of tax revenue, because the sections of society which are actually progressing in the new economy also need to pay their fair shares of taxes. So these are basically loophole closing measures. So we are moving towards a tax structure which has lower marginal rates, which is economically efficient, but also has fewer places to hide. और जैसे सर, इंटरनेशनली इन्वेस्टर्स को हमारे इस बजट को किस तरह से देखना चाहिए? व्हाट आर द कोर एरियाज ऑफ फोकस फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स? बिकॉज आप तो इंटरनेशनली जो एजेंसीज हैं उनके साथ भी डील करते हैं, इसलिए. So first of all, an international investor looks at the macroeconomic stability, what the policies are. As far as fiscal policies is concerned, it is very clear signal has been given. Invest into the economy, keep the growth rates high, and maintain the overall fiscal prudence. And with a consistent policy on the monetary side, gives a lot of confidence to international investors to look India, and they are looking at India in a very positive light. पाना सर, अगर आपसे सीधे सवाल करें, IDBI, SCI, ये जो कंटेनर कॉर्पोरेशन, भारत अर्थ मूवर्स, कुछ NMDC की सब्सिडीज, इन सब का डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ प्लान्स हैं या आप बिल्कुल कुछ डिस्क्लोज नहीं करना चाहते? ये तो ऑनगोइंग ट्रांजैक्शंस हैं और समय समय पर हम बताते रहते हैं मार्केट को जो प्रोसेसेस. जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी.
So you want to thank all of them. Right, yes. Thank you so much for joining us, secretaries in the Ministry of Finance, as well as the Chief Economic Advisor and CEO of Niti Aayog. It was a pleasure to speak to all of you, and I'm sure the viewers stood a lot to gain because you've clarified a lot of things and put things in perspective, which doesn't happen at the start of the day, but you know, by the time the day rolls out, we have you all, so things are put in perspective. So बहुत बहुत धन्यवाद. इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही. दीजिए इजाजत. नमस्कार. थैंक यू. Thank you so much for joining us.